اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ یہ جو 126 دن اروند کیجریوال نے جیل میں بتائے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ جیسے میں نے کہا پہلے، یہ کسی سے اسٹیٹمنٹ لے کے اریسٹ کر لیں گے اور اس کو پیش کر دیں گے مجسٹریٹ کے سامنے. بیل تو ملے گی نہیں، کبھی کو بیل ملتی نہیں ہے، تو پھر یہ کہیں گے صاحب انویسٹیگیشن ابھی چل رہا ہے. پھر جس کو سے اریسٹ کرتے ہیں اس سے کہلوائیں گے کسی اور کا نام کہ اس کا نام لے دو، تو وہ تو اب حراست میں ہے، وہ تو نام لے دے گا. پھر جس کا نام لیں گے اس کے پاس جائیں گے، پھر اس کو کہیں گے کہ تو اس کا نام لے دو، تو پھر اس کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. پھر ایسے 2-4 لوگوں کو اور نام لے لیں گے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. پھر نام لیں گے کہ ان کو دھمکائیں گے کہ بھیا تم نے بیان تو دے دیا 161 کا، پر 164 کا مجسٹریٹ کے سامنے بھی دو، نہیں تو میں تمہاری حالت پر بری کر دوں گا، میں تمہیں یہیں رکھوں گا، کئی سال رکھوں گا. تو آدمی ڈر جاتا ہے، یہ عام لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، تو 164 کا بیان ہو جاتا ہے. جب 164 کا بیان ہو جاتا ہے اور پھر یہ نئے نئے اکیوز کا نام لینے لگتے ہیں، اس میں منیش سسودیا بھی آ گیا، کیجریوال بھی آ گیا، کوئی اور لوگ بھی آ گئے، کویتا بھی آ گئی، تو پھر یہ ان کو جج کو کہتے ہیں دیکھیے صاحب ایک تو 164 کا بیان ہے، انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسے کیسے پیسے کس نے دیے، کیسے دیے، کب دیے، کہاں دیے، تو ان کے خلاف ہے سب کچھ. ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے اور لوگوں کو اکیوز بناتے رہتے ہیں، جن کو من چاہے ایک بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، اور ان کی سوچ ہوتی ہے راجنیتک کہ سرکار کو گرانا ہے، بھاجپا کو جیتنا ہے، اور تبھی جیت سکتے ہیں جب ان کو پکڑوائیں گے. So the point that I am making is that what the investigation agencies like the CBI do, that they get hold of somebody's oral statement. After taking that oral statement, they ask that person to name another person who they want. So that person names that other person. Then they go to that other person, he says that this man has named you, now you better behave yourself and name this person. So that is all off the record. Who will reveal that? Then they name the third person. Then this goes on. Keep on naming whoever they want to target. And then after that, they tell these very people who have orally told them and taken their 161 statements, they say, now you come to the magistrate and give a statement, otherwise you know what's going to happen to you. You'll never be able to get out of jail. So he gives the 164 statement. And then whoever they want to target, that person is made an accused. And then they go to court and say, see, there is a 164 statement where he has said that money was given here at this time, at this place, at this hotel, at this place, at that place. And this investigation goes on and people are in jail for 1 year, 2 years, 1.5 years, 3 years. And then, of course, nothing happens in the case. What has happened in the case against Chidambaram? Nothing. What's happened in the case against Hemant Soren? Nothing. And against Huda, that case that they had against the AGL and the allotment of the land, what happened in that case? Again discharged. But in that process, they destroy the reputation of people. केस में कुछ होता नहीं है. हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ? इन्होंने इनको हिरासत में रखा, फिर कोर्ट ने कहा, मैंने ही बहस की थी, कोर्ट ने कहा कि साहब इसमें कुछ प्राइमा फेशिया केस हमें लगता है कि है ही नहीं कोई, तो बेल मिल गई. लेकिन वो केस तो चलता रहेगा, वो भाषण देते रहेंगे, चाहे अमित शाह जी हों चाहे और हों, वहां जाकर भाषण देंगे. लालू के खिलाफ क्या हो रहा है? नए नए केस डाले जा रहे हैं, उसी कोई तथ्य नहीं है. मजिस्ट्रेट बुला लेगा, इलेक्शन के टाइम मजिस्ट्रेट बुला लेगा. वहां बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वो कहते यहां आके पेश करो. तो ये है कॉलोनियल माइंडसेट. इसको अगर खत्म करना है मोदी जी, तो इस कानून में आप संशोधन लाओ. आप संशोधन तो लाए, लेकिन
ان धाराएं में कोई संशोधन नहीं लाया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो आपने इस्तेमाल करना है. They have weaponized the law. You have not amended any of these provisions because you want to use it for targeting politicians. This is what is happening in our country. Now let me tell you another thing, which is even more important. If you look at the cases that have been filed, and this is very interesting, Arvind Kejriwal made an accused, Chief Minister put him in jail, won the election. Right? Now this election is after 4 years. By that time something else will happen in Punjab. Right? मैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आपने इलेक्शन जीत ली, और पंजाब में फिर 4 साल के बाद तो यहाँ इलेक्शन होगी. एट दैट पॉइंट इन टाइम ये कोई नया ढूंढ लेंगे. ठीक है. अच्छा, फिर इन्होंने किया, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, वो भी जेल रहे, 5 महीने जेल रहे. उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और फिर ये केस चलता रहेगा, ये बंद नहीं करेंगे केस. 2-3 साल चलाएंगे, अगले इलेक्शन तक चलाएंगे. सो दे विल नॉट क्लोज दीज केसेस. They arrested Hemant Soren, he was in for 5 months. But the case will go on. And then they will go and give speeches. That, look, see, there he is still an accused. He has done this, he has done that. Then Manish Sisodia, we've already taken his name. Then Satinder Jain, all their ministers. Then Bhupesh Baghel, shuru kar diya inhone. And the same exercise. This experiment, this pilot project against Kejriwal and others, ये तो pilot project था ना. वही पायलट प्रोजेक्ट अब इन्होंने छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया. उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया, फिर उनको हम बेल दिलाई. फिर इसके बाद लालू यादव नया केस डाल दिया, बोगस. फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा, वो तो खैर डिस्चार्ज हो गए. लालू यादव फ्रेश केस, टोटली बोगस. देन अशोक गहलोत, देन सचिन पायलट, then Farooq and Umar, then Mehbooba Mufti, then OBB Singh. आपको ये लगता नहीं कि सारे these are all belonging to the opposition? आपको कुछ लगता नहीं इसमें दाल में कुछ काला है? प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता, अमित शाह जी को नहीं लगता? तो कहीं ना कहीं आपको इनसे बहुत बहुत प्यार है, बड़ा स्नेह है. इतना स्नेह है कि आप चाहते हैं कि आप जेल में रहेंगे ताकि आप राजनीतिक खेल खेल सको. ये अच्छी बात नहीं है. देखिए, ये तो बाहर आ जाएंगे और आप भी बाहर चले जाओगे, ऐसा दिन तो आएगा ना. तो देश के लिए अच्छा नहीं है. अगर विपक्ष जब सत्ता में आ गया ऐसे काम करते रहे, वो भी गलत है. लेकिन इतना आप इतने एक्सट्रीम तक चले जाओगे. वी नो वेरी वेल दैट दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. दे विल ऑल कम आउट वन डे, राइट, एंड यू विल गो अवे वन डे. दैट इज ऑल्सो सेटल्ड. एंड इफ एवरीबॉडी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दिस, व्हाट हैपन्स टू आवर सिस्टम? And is it not a fact that none of these people belong to the ruling establishment, whether at the center or in the states? कोई भी इनमें से कोई ऐसा आरोपी नहीं है जो केंद्र में मंत्री है या कोई पॉलिटिशियन है या प्रदेशों में मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां बीजेपी राज कर रही है वहां वहां करप्शन तो इन्होंने खत्म कर दी, और जहां जहां कांग्रेस राज कर रही है वहां तो करप्शन मतलब कि ऐसी तेजी से चल रही है कि हर एक के खिलाफ केस करना पड़ता है. सो wherever this government is in power, whether at the center or in the states, nobody is corrupt, because Modi ji has actually ensured that there is no corruption in BJP states. He promised that to the nation and he delivered. But he could not deliver in Congress-ruled states, poor chap. This is not his fault. It is the fault of the Congress party. It must have been fault of Nehru, because Nehru must have brought this in. And then after Nehru, then Indira, then after Indira, then Rajiv,
Then after that, ministers of Manmohan Singh. Is this the way that agencies should run? And what's the point of telling, or the court telling the IO that he should be proceeded against? IO is not acting on his own. Of course, IO has to be proceeded against. But IO तो अपने मन से थोड़ी ना फैसले कर रहा है. IO को तो बताता जाएगा भाई इनको बताओ आप. वो कौन बताता है? ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कौन IO को बताता है. So this is a very dangerous thing that is happening in our country. ये बहुत ही खतरनाक एक रवैया अपनाया है सत्ता पक्ष के लोगों ने, और ये देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के, देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.